Write down optical instruments. The very first optical instrument is your eye. How do you find magnification and all? For that, look at this example. थोड़ी देर के लिए केवल यहाँ देखना भी. We have a line object AB, and this is the position of observer. ये observer की आंख है भाई. Just a point. Rays coming from A and B. The angle which A and B subtends at the position of observer. This theta decides size of the object. Suppose this distance is what, this height is what? H. And the distance from observer to point B is D. क्या आपने इस तरह की कोई चीज विजुलाइज की है कभी लाइफ में कि आपको A डैश B डैश एंड AB दोनों का साइज सेम दिखाई देगा? Let me give you a simple example. इसमें अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमने आज तक नहीं देखा ऐसा, क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है कि आप एक सिंपल 50 पैसा कॉइन लेकर मून डिस्क को कवर कर सकते हो? Does it mean कि मून का साइज और कॉइन का साइज सेम है? नहीं. You can easily cover the entire moon disk with the help of simple 50 paisa coin. This is your 50 paisa coin and this is that moon. अगर आपको कोई बताता नहीं कि मून इतनी दूर है, and if I give you a very neat and clean photograph of the moon in the shape of that 50 पैसा coin, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा मून है और कौन सा उसका फोटोग्राफ है, whose size is just size of that 50 पैसा coin. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग क्या नहीं देख पाते, हमें H का आइडिया नहीं लगता, अपने को D का आइडिया नहीं लगता. हमारा ब्रेन क्या ऑब्जर्व करता है? थीटा. And therefore we say that for observers thing which matters is tan of theta. What is tan of theta? H upon, which is same as H dash upon, let's say this blue height is H dash, this much, this is what? D dash. Now if angles are small, everybody knows that tan theta can be approximated with what? Theta. For us, what is the size of an object? That will be decided by theta, and theta is approximately what? H upon D. What is the meaning of this theta and all? एक बार सुनो उसको फिर नोट करना. अगर कोई आपसे बोले कि ऑब्जेक्ट आपकी आइज पर 5 डिग्रीज का एंगल सबटेंड कर रही है, अगर वो 10 डिग्री कर देगी तो आप बोलोगे उसका मैग्निफिकेशन है 2, उसका साइज आपको क्या दिखाई देगा? डबल. कितने लोगों को समझ में आता है ये? अगर मैं इस मार्कर को यहां से यहां लेकर आऊं, उसका साइज डबल हो गया मेरे लिए. आपके लिए इसका साइज सेम है, मेरे लिए डबल है. आपके लिए क्यों? क्योंकि कैन यू सी कि आपके लिए इसका जो D है दैट इज स्टिल सेम. मान लो आप बिल्कुल यहां बैठे हो, दिस इज D व्हिच इज सेम फॉर यू, लेकिन मेरे लिए जो D है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज. This height is what same, so you can see that light rays coming from this, and as it comes closer, light rays coming from this point, that angle simply increases, which means again same object AB which subtends an angle theta
and this same object again but at this position. Just केवल समझने के लिए let's call this total angle what? 2 theta. This height is what? H. We'll say that for this theta represents H upon D. For this 2 theta represents what? H upon D by 2. D की जगह मैंने कहाँ रख दिया? D by 2. तो जो आदमी यहां पर था क्या बोलने वाला है कि this object and this object they are not of same size. दोनों की हाइट डिफरेंट है. Now, अगर अपने को मैग्निफिकेशन का मतलब थीटा होता है ये मालूम पड़ा तो फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेनी है. हमें अगर किसी चीज को मैग्नीफाई करना है, if you want to zoom in, तो आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच तो कर नहीं सकते. आप केवल करोगे उसका एंगल क्या कर दो? इंक्रीज. अगर एंगल इंक्रीज कर दोगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा? मैग्नीफाई. What basically happens when you increase angle, वो भी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में. लेकिन यहाँ पर इतना पॉइंट समझ में आ गया that this and this they are of same size. This and this they are not of same size. ये दोनों इस ऑब्जर्वर के लिए इसका साइज क्या बना हुआ है? सेम. It's not about H, it's not about D, it's about ratio of H and D which matters. Let's draw this figure and then this, and write down figure 1 and figure 2. And then we'll write few statements. Write down the statement. For an observer, size of an object is not given by H. Instead, ratio of H and D defines size of an object. For example, in figure 1, although AB and A dash B dash are of different length or height, are of different lengths, but for the given observer, इसके लिए बात है, but for the given observer, as they both subtend same angle, they are of same size. The given observer, as they both subtend same angle, they are of same size. But in figure 2,
But in figure 2, although both objects are of different sizes, although both objects are of same length, whereas in figure 2, although both objects are of same length, for the given observer, size of A dash B dash is double of AB. Size of A dash B dash is double of AB. इसको और अच्छे से समझना कि हम किस तरह से इस पूरे पार्ट को कैसे थीटा का जो लॉजिक है इसको समझ सकते हैं. इधर देखना. This was you're looking at some what to say, a different galaxy, a different star. Galaxy छोड़ो, they are not naked eyes. If you are looking at a bright star in the night sky, there are several bright stars. क्या आप देखकर ये बता सकते हो कि वो कितना दूर है? No. क्या आप बता सकते हो कि देखकर कि उसका साइज क्या है? No. For you, if two stars are subtending same angle, फिर आपके लिए उनका साइज क्या होगा? सेम. वो कहाँ है, कितनी दूर है, हमारी आईज ये आइडिया नहीं लगा सकती. हमारी आईज ये आइडिया कितना दूर है लगाने के लिए उसको एक रीजनेबल डिस्टेंस चाहिए होती है. आपको आइडिया लग जाएगा मेरा साइज, इस अलमीरा का साइज, इस बोर्ड का साइज, इस चेयर का साइज, इसका आपको आइडिया लग जाएगा. लेकिन अगर आपको somehow if I say that if I ask you to move 2 kilometers from this place and somehow you can see दोनों पोजीशन, मेरी पोजीशन और चेयर की पोजीशन. So since this distance is large, 2 kilometers, अगर ये 2 kilometers है, एक ऑब्जेक्ट 2 पर हो और एक अगर 1.9 पर हो, तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन कितने डिस्टेंस पर है. And therefore, even if I change their sizes, actual height, actual length, I can still manage कि वो दोनों ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देने लगे, सेम. इससे आप पास आते हो, क्लैरिटी बढ़ती है, we can visualize. और उस क्लैरिटी को भी लास्ट लेक्चर में तुमको पता होगा, मैंने बोला था, if you close one of your eyes, then that clarity is also gone. If you close one of this eye, फिर आपका depth perception भी क्या हो जाता है? That is almost gone. I said almost because eye is not a point. Had it been a point, तो बिल्कुल ही perception क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. It's not a point. अलग-अलग जगह से light rays collect होती हैं. The thing is that for depth perception you need 2 eyes. Why? Because size थीटा के बेस पर डिफाइन होता है. अगर मैं इस मार्कर को यहां रख दूं, इस मार्कर का ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस आई, दे बोथ आर व्हाट डिफरेंट. इस पर अलग एंगल सबटेंड होगा, इस पर अलग. जब ये अलग अलग एंगल सबटेंड करेगा तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा इन दोनों थीटास को और उस थीटा के बेस पर अपने को बताएगा what is the actual size and what is the actual position, and that gives you an idea कि हाँ ये यहाँ पर है. Close this eye, repeat the same thing. यहाँ रखो, पास में रखो, दूर रखो, आप आइडिया नहीं लगा सकते कहाँ रखा हुआ. With several tries आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पर है. You can do this experiment. It's a very simple thing. जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. Hold it like this. हम लोग जब खुद इस पार्ट को करते हैं तो एक रफ आइडिया रहता है कि हमारा हाथ यहाँ तक है, ये फ्रेम.
Ask someone else to raise a finger like this and then go and try to make this one. In very first try, it's next to impossible. अगर मिल गया, that will be called तुक्का. जो भी physics है उसके पीछे, mathematical reasoning है उसके पीछे. Now, अगर हमने किसी चीज का size magnify करना है, suppose we are interested in we are interested in bacteria. एक बैक्टीरिया को अपने को देखना है ना, उसका साइज इतना छोटा है कि हाउ टू व्यू दैट बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज. तो वहां पर क्या करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, उस चीज को जरा देखना. जब आप पास लेकर आते हो तो क्या हो रहा होता है, और ये लॉजिक यहां से समझ में आएगा. Look at this A. For convenience we say theta, लेकिन basic reason ये होता है. यहाँ तुम्हारी eyes है. अगर आप A को देखना चाहते हो तो दोनों रेस कहाँ से आनी चाहिए? A से. इसमें तो A कहाँ से आ रही है? तो दूसरी कहाँ से आई हुई है? But for simplicity we use this theta. लेकिन फंडामेंटली आप कर क्या रहे होते हो? आप ये करते हो. देखना, जब ये A पर है, इसने इतना एंगल सबटेंड किया. Bring it closer. Can you see angle increase हो गया? That is basically what magnification. कितने लोगों को समझ में आता है कि अगर A यहां पर है, and when I move it to A dash, इस जगह पर अगर A है तो मेरी eyes कम लाइट रेस को कलेक्ट कर पाएंगी. Can you see that cone being formed is of smaller angle at position A? So once you reach this, cone angle क्या हो गया है? Increase. क्या आप visualize कर पा रहे हो? ये 3D है. It's a point object. आपकी आंख क्या है? Spherical thing. All the rays coming from this, as you move from A to A dash, that cone angle increases. More number of light rays are reaching you. It's closer, that means intensity increases. You can see very minute things in any tiny object. जैसे से आप दूर करते जाते हो, number of rays coming from that वो कम होती चली जाती है. इसका मतलब जो उसकी डिटेलिंग है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है. अब इस डेप्थ की जगह आपने ये काम चला कि कौन इस थीटा को डिफाइन करे, लेकिन ध्यान रखना यही हो रहा है. जैसे जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को पास में लिया, अब इसका एंगल देखना, ये इंक्रीज हो गया. यहाँ ये बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है. इसी पास में आएगा A डैश पर आया, एंगल चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, which decides what? Magnification. ये फंडामेंटल पार्ट है. nobody is going to ask you this. समझा रही है मैंने इस चीज को. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आ रहे हैं तो हमने बोला कि यार इसका साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज. ये साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो फिर और पास में लाओ, और पास में लाओ, बिल्कुल आपके अंदर ले जाओ. अगर आपके अंदर ले जाओगे तो थीटा जरा 90 हो गया, इतना बड़ा दिखेगा कि दिखना ही बंद हो जाएगा. Point is, as you bring it closer, there is a point, there is a limit beyond which if you move it closer, although size will increase for your brain, but you lose what? Clarity. जो इमेज है वो क्या बनने लगेगी? Blurred. क्यों बनेगी blurred? क्योंकि फंडामेंटली हो क्या रहा है? फिर से यही बनाते हैं. इस आदमी की जो आईज है, that's the eye lens, convex. सीखना. अब यहां से रेज आ रही थी, जो रेज यहां आ रही थी ये यहां पर मीट कर रही है. At this point, this is the eye cavity. That's the place where your retina is present. Your eye lens focuses these two incident rays at this point. आपने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेकर आया, A से आप कहां लेकर आ गए? A डैश. कितने लोगों को दिख रहा है कि आप रिफ्रैक्शन इस पॉइंट के पीछे होगा? ऐसे लेकर आ रहे हो, रिफ्रैक्शन ऐसे होता है. सिंपल सा ये तरीका याद रखना.
अगर आप ऐसा करोगे तो इधर निकल जाएगा, सिंपल चीज है ना। जैसे ही हमने इसको यहां लिया, अब ये यहां होगा। Now that all the eye, this eye cavity and all, we can change the size also. The muscles and all, by relaxing these muscles and by straining the muscles, you can change what? Size of retina, position of the retina. लेकिन एक लिमिट है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई आपका ये फोकस जा रहा हो यहाँ पर तो आपने अपना रेटिना यहाँ भी पहुंचा दिया। अगर आप इस तरह के एब्नॉर्मल इंसान नहीं है तो फिर आपको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देने लगेगा? ब्लर। देयर इज अ लिमिट कि आप अपने रेटिना को क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो, साइज को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। This thing decides what? Clarity, which means if I bring the object closer, magnification is increasing, size is increasing, but there is a last point, and that last point is called near point. That near point distance is d, which depends on your age, your ability, your health, and so many things. But for normal people, we say that this d is roughly 25. So this is the observer. If you place an object at what distance? 25, and the angle which it subtends, we'll call it what? Theta naught. Theta naught is what? H divided by, this is the maximum angle which this observer can see without losing clarity. इससे पास जाओगे, एंगल तो इंक्रीज होगा, but you also lose what? Clarity. इसका मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। This is the last place. This position जहाँ ये रखा हुआ है, this is called near point. This D is called least distance of distinct vision. So note down this. First draw this figure and write down this. ये केवल समझाया है, कोई चाहे तो इसको अलग से दिखा सकता है साइड में, इसकी जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ में आ गया होगा। The main thing I am interested in is this. Write down the heading least distance of distinct vision. Inside the bracket capital D. Least distance of distinct vision. This D, note down this. As object is moved closer, as an object is moved closer, its size increases, or it appears to be increasing. You know what I mean by size. Size increases, but strain on eyes also increases, but strain on eyes also increases. After a particular distance d, capital D, after a particular distance d, eye lens cannot focus, eye lens cannot focus incident rays properly. Eye lens cannot focus
incident rays properly. And because of this, object looks blurred. Because of this, object looks blurred. Nearest point where we can see an object clearly is called near point. And its distance from the eyes is called least distance of distinct vision. And its distance from eyes is called least distance of distinct vision. Well, let's see how we use optical instruments. Once we have defined theta, naught, all these things, we can take advantage of all those lenses and all the calculations which we have done so far. Write down the heading microscope, and the first thing is simple microscope. Main heading is microscope, and subheading part 1, simple microscope. Simple microscope के नाम से डरना मत, simple convex lens. Hand lens देगा, simple magnifier, that is called what? Simple microscope. Simple microscope is a single convex lens. Inside the bracket you can mention that simple microscope is a single convex lens. नाइन्थ टेंथ में बायोलॉजी लैब में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देखा होगा, तो वो कमी यूज करते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मली आदमी देख लेता है. अब यहां क्या देखना है, अब क्या करना है. How do you define magnification when somebody is using a microscope, a simple microscope, and थोड़ी देर बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तुम करना क्या चाहते हैं, पहले वहां चले. This theta naught is what? Theta naught is the maximum angle which an object can subtend on the naked eyes. You're not taking any help from microscope, simple or compound. Maximum size आप जो देख सकते थे वो theta naught था. किस डिस्टेंस पर d? इससे पास लाओगे एंगल तो बढ़ जाएगा लेकिन क्लैरिटी कम हो गई. अब हमने एक माइक्रोस्कोप यूज किया, which is a simple microscope for us. For a simple microscope, magnification is given by theta divided by, for any microscope, m is given by theta divided by theta naught. क्या लिखा हुआ है देखना जरा, पहले सुनना बाद में नोट करना. मान लो ये थीटा नॉट था 5 डिग्री, 5 ऐसे बोल दिया समझाने के लिए. 5 तो आपने खुद ही देख लिया था. अब आपने लिया एक हैंग लेंस सिंपल कॉन्वेक्स, उस कॉन्वेक्स से इसको आपने देखा तो जो एंगल सबटेंड हो रहा था वो बन रहा था आपका 10, तो आप बोलोगे जो मैग्निफिकेशन है वो है 2. तो हमने यहाँ क्या कर रहे हैं बोलो, हम किसी भी थीटा में इंटरेस्टेड नहीं, किस थीटा में इंटरेस्टेड है which is the maximum. इसके ऊपर over this theta naught, whatever the magnification you can get, you are interested only in that part.
this theta naught is 5. Somebody says that use this hand length and your theta will become 15. That means simply magnification is what? 3 times. So magnification की कहानी है? So microscope, any type of microscope, n is what? Theta 1, theta naught. What is theta? Theta is angle subtended by the instrument on the eyes of what? Observer. And theta naught is what? Angle subtended by the object when it is placed at near point without any instrument at all. Write down the heading for magnification. Magnification for a microscope. Magnification for a microscope. First write down m equals to theta upon theta naught. Write down theta is angle subtended by the microscope. Theta is angle subtended by the microscope on the eyes of the observer. And theta naught is the maximum angle subtended by the object when it is placed at near point. Inside the bracket without any microscope. That is naked eyes. You're not taking help from any instrument at all. The maximum you can get is theta naught. And now you took help from something. बोर्ड पर अब इस पूरी कहानी को याद देखना. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, देखते जाना. ये लेंस और ये केवल समझा रहा हूं, पैरेलल में ड्रॉ मत करना, ड्रॉ करने का तरीका सिखाऊंगा. देखना भाई, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इस तरह से जाएंगी. नॉर्मली आते ऐसे ड्रॉ करेगा, इसलिए बाद में बताऊंगा क्या ड्रॉ करना है आपने. दूसरा रे ये जाएगा, अगर दूसरा रे ये जाएगा तो आप बोलेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है. ये जो इंटरसेक्शन यहां पर होगा तो अपना ऑब्जर्वर बोलेगा कि इसको ऑब्जेक्ट H ये नहीं दिख रहा है, इसको इस H की जगह पर बैक साइड में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? H dash. So virtual image instead of H आपने क्या देखा? H dash. बोर्ड पर बताना कितने लोगों को समझ में आता है ये. This distance is what? Mod of u. मेरा फायदा तभी होगा ना जब ये mod of u किससे कम होगा. अगर mod of u क्या है? Less than capital D. If I remove the lens, image is blurred. If I remove the lens, मुझे ये दिखाई देगा. कहाँ रखा हुआ है? Near point से भी पास में. Clarity is gone. क्या यूज किया तुमने? लेंस.
लेंस यूज करते ही इमेज कहां पर फॉर्म हुई है तुम्हारी, मॉड ऑफ विच इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल डी। इस आदमी को एच दिखा या एच डैश, कहां रखा हुआ है, डी से ज्यादा, इसका मतलब क्लैरिटी बनी रहेगी, बिल्कुल। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एच ने यहां पर कितना एंगल सबटेंड किया लेंस पर, थीटा। हमने लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय द माइक्रोस्कोप ऑन द आईज ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की आईज भी यहां होती है, अब ऐसे नहीं देखते कि ये माइक्रोस्कोप है आप दूर खड़े हो 1 किलोमीटर, हाँ अच्छा दिख रहा है बैक्टीरिया, नो पास में लेके देखिए, ये यहां पर है इसके यहां। प्लस दूसरी चीज और भी है, बाद में देखेंगे, आंख यहां पर है, लेंस इतना बड़ा नहीं है, लेंस छोटा है, फिर तुम्हारी आइस का साइज ही है और लेंस तुम इतना बड़ा लेके आ गए, तो यहां से रे ऐसे घूम के आंख के अंदर थोड़ी जाएगी, तो लिमिट होनी चाहिए। इसलिए अपन कहीं देखना ज्वेलर्स एंड ऑल वो देखते हैं तो उनका जो माइक्रोस्कोप होता है वैसा होता है छोटा, क्योंकि आपकी आइज भी छोटी है, यहां से जो भी लाइट आएगी वो यहां जाएगी, दिखाने के लिए अपन ने इतना बड़ा बनाया हुआ है, which only means all the angles are small, angles are small, हमारा tan theta justified है, क्या बना रहेगा, थीटा। आगे से याद रखना एंगल सबटेंडेड बाय ऑल दीज थिंग्स एट द ऑप्टिकल सेंटर द सेम एज व्हाट ऑन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, टेंशन भी करा दूंगा। पहले जरा यहां देखो, जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से अंदर रखा, let's call this point as near point, near point, less than this, यहां तक कैपिटल डी है, मॉड कहां तक बता तुमको बताए, यू यहां तक है। जो अपना मैग्निफिकेशन था, कितने लोगों को दिख रहा है, थीटा मींस दिस, एच डैश डिवाइडेड बाय b dash p, b dash आने वाला है अभी। What is this point? a dash. What is this point? b dash. Optical center को क्या बोल दिया, p. What is the angle subtended by this object? What is the height? h dash. What is the base? b dash p. समझ में आया इतना? थीटा नॉट अभी भी सामने है, थीटा नॉट क्या होता है, h डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल D। थीटा नॉट के लिए आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, थीटा नॉट का मतलब क्या होता है, रिमूव द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, naked eyes and the maximum angle which you can feel or see, that is what, theta naught। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि this is basically this h upon bp। What is this point? A. What is this point? भाई जो थीटा ये सबटेंड कर रहा है वही तो ए भी कर रहा है। What is the angle subtended by AB? H divided by BP। समझ में आया? ये लिखा है H divided by, पहला क्या हुआ, HH क्या हो गया? This is coming D divided by mod of what? What is BP? Mod of U, BP। कितने लोगों को दिख रहा है मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1? What is mod of U? Less than D। डिनोमिनेटर इज लेस देन D, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। समझ में आया इतना पार्ट? थोड़ी देर में कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगे, इतना क्या समझ में आ गया आपको इतनी जल्दी, विल सी दैट लॉजिक इज। अभी के लिए पॉइंट सुनना जरा, अभी कुछ नोट नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ कैसे करना है नई डायग्राम में। और हम दो केसेस में मैग्निफिकेशन को स्टडी करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या क्या करते हैं, एक तो सपोज यू आर लुकिंग एट मून, क्यों समझाने के लिए, रेज कमिंग फ्रॉम मून एंड रेज कमिंग फ्रॉम दिस मार्कर, जब इतना पास रखोगे और मून को देख रहे हो, दोनों केस में आपकी जो आईज है वो अलग अलग स्ट्रेस लेवल पर है।
जब आप बिल्कुल पास पे लेकर आओगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, स्ट्रेन भी क्या होगा, मैक्सिमम। When rays are coming from moon, that means कहां से, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं उनको फोकस करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, लीस्ट strain on the eyes. Rays coming from near point, stress will be what, maximum. Near point से और stress और बढ़ेगा, लेकिन किसी काम का नहीं है हमारे लिए क्योंकि clarity is gone। तो हम दो जगह का मैग्निफिकेशन देखते हैं। एक कौन सा मैग्निफिकेशन, when image forms at infinity, second when image forms at near point. These are the two cases we are going to discuss. ये जनरल फिगर मैंने बना दिया है, अभी इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देंगे। कितने लोगों को लेकिन ये समझ में आता है कि when I say image forms at infinity, when I say image forms at infinity, ये लिखा हुआ है d upon f। अगर ये इमेज कहां पर बनी तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, फोकस पर, तभी तो इमेज कहां बनेगी, ये बन जाएगा d upon f। इधर अगर मैंने इमेज को कहां बनाया, नियर पॉइंट, इसका मतलब v की वैल्यू है -d। v की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ क्या है, f। क्या फाइंड करना है तुम्हें, mod of u, how do you find that, 1 upon f equals 1 upon v minus 1 upon u। कहानी खत्म, मैग्निफिकेशन। डॉट फिर के कहां आ गया, अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन, and is what, 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u, वही चीज लिखी हुई है। इतना पार्ट समझ में आया। Before you continue with this, tell me this thing. हमने बोला कि जो एंगल किसने बनाया, ऑब्जेक्ट, कितना बना रहा है वो, वही किसने बनाया, तो फायदा क्या हुआ, मैग्नीफाई क्या किया तुमने, कुछ नहीं। He can only see image observer. भाई ये भी कितना है, थीटा, और ये भी कितना है, बड़ा लेंस, यही रख देना ऑब्जेक्ट को, अभी तो थीटा बनाएगा या नहीं, थीटा नहीं बनाएगा, थीटा से क्या बनाएगा, कम। अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट को यहां की जगह यहां रखा, कैन यू सी एंगल कम बनेगा। जब तुमने यहां रखा, लोगों को लगता है सर ये ऑब्जेक्ट जब यहां रखा हुआ है, रिमूव द लेंस, रिमूव द लेंस, आपकी आईज पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, थीटा। फिर से लेंस लेकर आपकी आईज पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, फायदा क्या हुआ, दैट्स द पॉइंट। जब ये यहां रखा हुआ है, इधर जब ये यहां रखा है तो कहां रखा हुआ है, नेकेड आईज। नेकेड आईज मींस ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा, ब्लड। ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, ब्लड। रीपोजिशन द लेंस, इस ऑब्जेक्ट की जगह आपको क्या दिखाई देगी, इमेज वही साइज की, जब ये लेंस नहीं था उसी वक्त, जब ये लेंस नहीं था जो साइज दिख रहा था वही साइज आपको लेंस रखने के बाद भी दिखाई देगा, बट जब लेंस नहीं था इट लुक्स व्हाट, ब्लर्ड। वंस आई प्लेस द लेंस, मुझे अब ये नहीं दिखता, मुझे क्या दिखाई देती है, इमेज। और वो इमेज कहां रखी हुई है, ग्रेटर देन d, बियॉन्ड द नियर पॉइंट, अवे फ्रॉम योर आईज, एंड देयरफॉर ये इमेज क्या दिखाई देगी, क्लियर। और अंदर क्या हो रहा था वो भी समझाऊंगा। नाउ फर्स्ट ड्रॉ दिस मच, we'll write few points and then ultimately we will get the values of these things। मैंने इतना बनाओ, एक ये रफ डायग्राम है अपना, दोनों केसेस के लिए सेपरेट फिगर बनाएंगे अभी अपन। This is just for the mod u, d and all these things। Write down this point first. If object is placed between focus and optical center, if object is placed between focus
and optical center, then क्या होता है then? For a convex lens, if you place something between focus and optical center, then you always get virtual image. Yes, sir. इस तरह की इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल। क्या देख रहे हो आप? वर्चुअल इमेज देख रहे हो। तो अपने को ये कहाँ रखना है पहली चीज? बिटवीन फोकस एंड बिटवीन फोकस यहाँ दिखा भी दिया आपने। यहाँ पर क्या आएगा? एफ। इसका मतलब एफ को पक्का है डी से क्या होना है? कम। अब हमने बोला था यहाँ पर किससे कम होना चाहिए? डी। अपने को पता है डी से भी कम किसको होना पड़ेगा? एफ। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ होना होगा? एफ से भी कम पोजीशन। Say we are writing this point first. By the way, do you remember this thing or not? अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? Focus. There are two focus. This is f1 and this is f2. Flight is coming from this side, यहाँ meet करेगा. Flight is coming from this side, यहाँ meet करेगा. किसका distance ज़्यादा होता है? Left वाले का, right वाले का? Same, एक ही चीज़ है. लेकिन बोलने के लिए कि कहाँ पर है? This is the lens. If you place an object somewhere between this field, जो इमेज फॉर्म होती है इस सिचुएशन में, रेज यहीं पर जाएंगी, लेकिन उनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा होगा? This side. So when you place object between focus and optical center, बता रहा हूँ केवल इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, image is what? Virtual. Why we are not interested in real? ये बाद में पूछूंगा। भाई real image क्यों नहीं बना रहे? Real image में क्या प्रॉब्लम आती? बाद में डिस्कस करेंगे। Continue the statement. क्या बोला मैंने statement? If object is placed between focus and optical center, then its image is virtual. Then its image is virtual. As size of lens is small, as size of lens is small, lens मतलब simple microscope, and eyes are close to the optical center of lens, and eyes are close to the optical center of the lens, angle subtended by object inside the bracket H and image and virtual image inside the bracket H dash at the optical center is same inside the bracket theta. Inside bracket theta. ये कहानी रियल में नहीं होती है। इधर रियल में तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी इमेज बनी यहाँ पर, आइज तुम्हारी यहाँ है, ये एंगल सबटेंड करेगा, ऑब्जेक्ट कुछ और करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इधर क्या है? इमेज। ये तुम्हारी आईज है, इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज का जो एंगल फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट का ये अलग अलग होंगे। इफ इट इज वर्चुअल, जो एंगल एच फॉर्म करेगा वही कौन फॉर्म करेगा? एच डैश, बिकॉज ऑफ दिस। इसमें भी एक और चीज बता दूं, लेकिन शायद लेंस फॉर्मूला डेवलप किया होगा उसमें बताया होगा। व्हाई इज दिस वे मूविंग स्ट्रेट?
this ray is moving through the center of the lens or the optical center. लोगों को लगता है it's passing through optical center, it suffers no refraction. No, that's not the reason. It has suffered double refraction. Did we develop lateral displacement? Yes. Yes. Lateral displacement नहीं बताया मैंने. Did I teach you something like this? Glass slab, light यहाँ से आई, इधर गई, इधर चली गई. This shift is called lateral displacement. ये बताया कि नहीं बताया मैंने? ये जो lateral displacement है x, ये किसका फंक्शन होता है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की. इधर क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे दोनों का एंगल सेम है? क्वेश्चन भी क्या होगा कि एंगल दे रखा है ग्लास वाटर डेट कुछ भी पता होगा. अगर ये थीटा है तेरा तो ये एंगल भी क्या होगा? क्योंकि अगर ये एयर है और ये भी क्या है? एयर. पॉइंट इज ओरिजिनल रे एंड द इमर्जेंट रे, दे बोथ आर व्हाट? पैरेलल. इनका जो शिफ्ट है x, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट और ये किस पर डिपेंड करता है? थिकनेस. अब फिर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप खुद फील कर सकते हो. यहाँ पर अगर मैं ये ग्लास स्लैब बहुत थिन ले लूं, थिन, अगर ये थिन ग्लास स्लैब है तो देखना क्या होने लगेगा. ये यहाँ आएगी, रिफ्रैक्ट होगी और इधर निकल जाएगी. देखा? हल्का फुल्का शायद दिख रहा हो, रिफ्रैक्शन हो रहा है. फिर से थिन लेंस. अब ये सिंपल लाइन जो दिख रही है तुम्हारे लिए क्या हो गई है? थिन. लाइट रे आई, हमने दिखा दिया ऐसे. तो क्या यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है? हाँ, डबल रिफ्रैक्शन. दिस एंड, लेकिन दोनों का एंगल क्या बना हुआ है? मिडिल पोर्शन ऑफ ग्लास, मिडिल पोर्शन ऑफ अ लेंस acts as what? A parallel face glass slab. इतना ऐसा देख, ये पोर्शन और ये बिल्कुल पैरेलल ग्लास स्लैब हो गई, पैरेलल फेसेस. एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस डू वी स्टडी? थिन. इसका मतलब ये सेपरेशन बहुत कम है. फायदा क्या होता है उसका? उसका फायदा ये होता है कि ये जो एंगल थीटा आ रहा है वही एंगल क्या होगा? ये भी होगा थीटा. दिस एंड दिस, इन दोनों का एंगल क्या बनेगा? सेम बनेगा. इधर क्या आपको दिख रहा है? ये वाला एंगल और ये सेम नहीं है जानने के लिए, ये तो ऐसे निकल गया. लेकिन ये जो एंगल यहां आया, रिफ्रैक्शन के बाद भी क्या बना हुआ है? सेम बना हुआ है. याद रहेगा एकदम. फायदा कब उठा पाएंगे इस चीज का? जब आप वर्चुअल इमेज फॉर्म करोगे. रियल में भी जो लाइट यहां से पास हो गई होगी, उसका ये और ये एंगल क्या होंगे? सेम ही होंगे. बट ऑब्जर्वर के लिए उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट. As of now, we need to place the object between what? Focus and optical center. ये वाला पार्ट क्लियर? Then जैसे आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, अपने को मालूम पड़ा कि इमेज का फॉर्म होने वाली है वर्चुअल. Now we are going to study these two cases. Write down case 1 in the simple microscope. Magnification produced by a simple microscope when image forms at infinity. Magnification produced by a simple microscope when image forms at infinity. First, let me draw the Venn diagram and then आप उसको कॉपी करना और सीखना.
इधर देखना भाई, क्या क्या आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रे डायग्राम ड्रॉ करते हो उसको सीखना। लेंस ऑब्जेक्ट रखा, ये लेकर आए, रिफ्रैक्ट कराया, इधर से लेकर आए, प्रॉब्लम आ गया, इमेज क्या फॉर्म हो गई, रियल। हम बचना चाहते हैं इससे, फिर वो आदमी ये करता है, फिर इधर जाता है। आप ये सब नहीं करोगे, आपने रे डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, दिस इज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल, रिमेंबर द रिजल्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे टाइम सेव करना है रे डायग्राम से, वो देखना। मेरा लेंस, यहां पर रख दो ऑब्जेक्ट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इधर देखना क्या करना है, यहां से एक रे लेके चलना है इधर, इसी रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते चले जाना, जहां आपकी मर्जी हो वहां तक। फिर यहां पर क्या ड्रॉ कर देना, वर्चुअल इमेज, ब्रोकन लाइन, क्योंकि रे यहां से चलेगी। दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टेड। इधर अब आप क्या करना है, इसको यहां लेकर आना पैरेलल। अब यहां पर अपनी एक तरफ से अभी कुछ नहीं करना है, अब तुमको ये करना है, अब स्केल एंड ऑल जो भी यूज करना चाहो उससे करना। जॉइन दिस विद दिस एंड देन मूव, ऑटोमेटिकली डाइवर्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट भी बन जाएगा आपका। मैं जैसे नहीं कर दे रहा हूं, यहां पर देखना भाई, so this is your A point, this is your B point, this is what A dash, and this is what this for case 1 is what infinite. ये चीज कहां जाकर फॉर्म हो रही है, infinity, and therefore you will say that this point represents what, focus. If it represents focus, then it means इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मॉड ऑफ यू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, f, एंड मैग्निफिकेशन विल बी d divided by f, which also demands that f should be less than what, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, लेस देन d, अदरवाइज मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा तेरा, लेस देन 1। कोई फायदा नहीं उस चीज का। कितने लोगों को ये समझ में आया बताना, डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में, बाद में नोट करना। इधर इधर डी, ये जो एफ लेस देन डी है, याद आ रहा है एफ क्या था, अगर अपने पास कैसा लेंस है, ग्लास, एंड बोथ साइड रेडियस इज व्हाट, सेम, उसका जो फोकल लेंथ था, सॉरी फोकल लेंथ क्या आया करता था उसका, रेडियस ऑन दिस साइड एंड दिस साइड दे आर सेम। कई बार बताया होगा मैंने इस चीज को, ग्लास लेंस प्लेस देयर, आर शुड बी व्हाट, लेस देन डी। डी रफली अपने कितना बोला हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है लेंस की वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 25 सेंटीमीटर। नॉर्मली जब आप लेंस बनाते हो तो वो लेंसेज इस तरह के होते हैं, मैग्नीफायर लेंस, इनका रेडियस बहुत ज्यादा कम है 25 से। कैन यू फील कि 25 से बहुत कम होगा, 25 सेंटीमीटर पे यहां पर जाकर फिट होगी कहानी। दिस इज मच स्मॉलर देन दैट। इसीलिए द स्मॉलर curvature you have, more magnification it produces. The more flatter lens you use, more flat it becomes. R बढ़ाते जा रहे दिख रहा है, अगर R बढ़ाते चले जाओगे और R एक तेरा 25 हो गया मान ले, अगर R कितना हो गया 25, तो फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 25/25 क्या बनने लगेगा, 1। क्यों बनने लगेगा, the more flatter it becomes,
और एक तरह से लेंस की जगह आप किसे यूज कर रहे हो, सिंपल ग्लास स्लैब, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो चुका है, खत्म हो गया है। इसी की जगह अगर मैं छोटा सा लेंस रखूंगा then I can use the magnification power of this small lens. समझ में आया क्या बताया यहाँ पर? फर्स्ट केस में रे डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका फिर से, draw the lens, draw the object, draw this incident ray first, produce it backwards at any orbit point, take the image A dash B dash, draw this parallel line, then don't continue with this, start from A dash, join this and then move forward. पूरी कहानी Put on this. और उसके साथ मैग्निफिकेशन। Done. Case 2. Write down case 2. In case 2, mention this image formed by the lens, by the simple microscope. Image formed by the simple microscope forms at near point, forms at near point, inside the bracket maximum strain. केस 1 में मैंने लीस्ट स्ट्रेन मेंशन करा दिया था। केस 1 में इमेज का फॉर्म हुई थी इंफिनिटी, इसके साथ ब्रैकेट में मेंशन कर लेना लीस्ट स्ट्रेन ऑन द आईज। Since rays are coming from infinity, it's very easy to focus them at by the eye lens. You can easily focus them. As you bring object closer, last point is the near point. उसके बाद focusing possible नहीं हो पाती. Now, for the second case, look at the derivation. Pass कर ले रहे हैं. अपन इसी फिगर में कर रहे हैं, तुम भी इसी में करो या हमारी मर्जी है। अपने को तो पता है डिस्टेंस कितनी है इस बार, d। समझ में आया? ये d है, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है अपना? d अपॉन मॉड u, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब 1 upon f is what? 1 upon v minus 1 upon 1 upon f. What is v? Minus v. What is u? Minus of mod u. ये mod के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। mod का और भी फायदा है, mod में दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ ही दिखेगा आपको, इमेज भी ऊपर की तरफ दिखेगी, इसलिए mod ज्यादा काम का रहता है। अब मैं यहाँ u लिखता फिर नेगेटिव लगाता, if I use simply u, then n will be minus of d upon u. That is not negative, because u itself is what? Negative. इसलिए mod पसंद करते हैं। Now 1 upon f तेरा f ही है, 1 upon v minus 1 upon u. ये नेगेटिव क्यों आया पता आपको? From this, इसी में कर दे रहा हूँ मैं। क्या यहाँ देख लो, ये देखा? d से मल्टीप्लाई कर दे। Once you multiply by d upon mod u, ये तो चाहिए था। What is the answer? d upon minus v minus 1 शिफ्ट कर कितना आ गया? 1 plus what? d by, पिछली बार क्या आंसर था? अब कितना हो गया? 1 plus मैग्निफिकेशन बढ़ गया। पिछली बार से क्या हो गया? ज्यादा 1 हुआ, लेकिन ज्यादा तो हुआ। पहले 5 टाइम्स हो रहा था, अब हो रहा है 6 टाइम, कुछ तो फायदा हुआ। और ज्यादा फायदे के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास जाएंगे। But can you see the entire derivation is quite easy? Can you see that in schools and all, they can also ask you, other than these two cases, they can say that what magnification you get if image forms at 3D.
तो आपने क्या करना होगा, आपने कुछ नहीं करना होगा, आपने यहाँ आना है इस फॉर्मूले में और ये देगा क्या पुट कर देना है, 3D पुट कर देना। हो जाएंगे इस तरह की चीजें। नोट डाउन द सेकंड केस। कितने लोगों को दिख रहा है कि इस बार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है f की लेस देन d होने की, even if f is greater than d, your magnification is still more than 1। लेकिन फायदा नहीं होगा, फायदा तो नहीं होगा, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्या आपने देखा है कि जो लोग केवल स्लाइट मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, then they don't use a very tiny lens, they use a very big lens so that they can manage what brightness also। उस केस में अगर उनको आईज को बिल्कुल पास में लाने की जरूरत नहीं होती। बड़ा वाला हैंड लेंस देखा है, बड़े वाले हैंड लेंस में उसका रेडियस भी क्या है, बहुत लार्ज। तो अब कोई बहुत छोटी सी चीज देखना नहीं चाहते, आप थोड़ा सा साइज को क्या करना चाहते हो, मैग्नीफाई। इट्स काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज रिटन वेरी स्मॉल राइटिंग में कुछ है, फॉन्ट्स में आप उसे यूज करना चाहते हो। तो स्मॉल राइटिंग में कोई चीज है उसे आप देखना चाहते हो, यू विल नॉट बी यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको इंक के डॉट 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 थोड़ी फील करने हैं। आपने क्या देखा, छोटे छोटे फॉन्ट्स में था, फॉन्ट मतलब फॉन्ट, छोटे छोटे फॉन्ट। तो आपने क्या किया, सिंपल इस तरह का लेंस यूज किया। इसका f अगर ज्यादा भी हो तो असर पड़ने वाला नहीं है। f अगर ज्यादा होगा तो उसका r भी क्या होगा, ज्यादा। r अगर ज्यादा होगा दैट मींस आप एक अच्छा खासा लेंस यूज कर रहे हो। दिस लेंस दैट मींस व्हाट, आपने ज्यादा एरिया कवर किया, दैट मींस व्हाट, आप पूरी की पूरा टेक्स्ट जो है you can easily read that, and this one will make sure the magnification is what, greater than 1। डन। फास्ट चीजों को देख लेना भाई अपना। हेलो, मैग्निफिकेशन के लिए mod of u should be less than what, f। this will make sure कि इमेज किस तरह की फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। तो better magnification, for magnification this f should also be less than what, d। ये हमने किया हुआ है। अगर ये नहीं हो रहा है तब भी when image forms at near point आपको क्या दिखाई देगा, magnified object। लेकिन if you maintain this, magnification will be better। you have to make sure you so that your image is what, virtual। this is a must, this is also a must if image forms at infinity। जब इमेज इंफिनिटी को बन रही थी तो मैग्निफिकेशन के लिए f को क्या होना पड़ेगा, छोटा। लेकिन अगर इमेज कहां पर बन रही है, नियर पॉइंट पर, देन दिस इज नॉट अ मस्ट। याद रहेगा इतना, मेंशन दिस इंफॉर्मेशन एज अ साइड। नाउ सेकेंड थिंग इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतना टाइम नहीं है कि वो हो पाए, हल्का सा उसका आइडिया दे देता हूं जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास तक रिलेट कर पाओ। बोर्ड पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब दो तरह के लेंस होंगे, सुनना रे जरा, ये रिजल्ट देखना भाई फास्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुम्हारे पास दो लेंस होंगे। अब वहां पर ये आगे का लेंस ऐसा होता है छोटा,
ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। कभी आपने सिंपल बाइनोकुलर या छोटा वाला चीप टाइप का टेलीस्कोप उल्टा पकड़ा है? उल्टा पकड़ के कोई चीज देखोगे तो वो दूर दिखेगी, लेकिन नीचे की तरफ किसी पेज पर उसको प्लेस कर वो चीज मैग्नीफाइड दिखेगी। टेलीस्कोप में ये आईपीस होता है और ये ऑब्जेक्टिव, आगे इसका बड़ा ये छोटा, क्यों? यहाँ इसके साइज क्यों नहीं चाहिए, ये बड़ा क्यों? लाइट रेज ज्यादा कलेक्ट हो पाए। उल्टा कर दें, इट बिकम द माइक्रोस्कोप, छोटा मोटा चीप टाइप का। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट केवल ये मेरा लेंस है, इस पहले वाले लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? m1। लेट्स से वो मैग्निफिकेशन था क्या? 5। ये जो इमेज फॉर्म करेगा, सुनना रे, ये फर्स्ट लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट की, उसका मैग्निफिकेशन लेट्स से कितना है? 5। नाउ ओरिएंटेशन इज सच दैट कि इसका यहां पर एक रियल इमेज फॉर्म, पहले वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाया करेगा? एक रियल इमेज। क्यों बनाएगा? कोई समझा रहा हूं। ये जो रियल इमेज होगी, अब इस इमेज के लिए ये वाला लेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? m2। इधर भूल जाए इसको, भूल जाए इसको, केवल यहां देख। अगर केवल यहां देखें, कैन यू सी d by f and 1 plus d by f is the value of m2? अगर मैं इसे भूल जाऊं, इसको भूल जाऊं, इसकी इमेज कहां बनी हुई है? एट दिस पोजीशन। दिस इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। ये वाली इमेज इस नेकेड वाले लेंस के लिए क्या काम करने वाली है? ऑब्जेक्ट। हमने बोला यार ये तो तेरा सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, अभी भी इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन है? ये रखा हुआ है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है will make sure कि ये ऑब्जेक्ट फिर से कहां हो? It follows this। अगर ये ऑब्जेक्ट लेस देन f है, पोजीशन इज लेस देन f, उसकी इमेज कहां पर फॉर्म होने वाली है? यहां पर। कैन यू सी इन्वर्टेड? खुद क्या है ये? इन्वर्टेड। इसकी ये क्या बनी है? वर्चुअल इमेज। इसकी ये क्या बनी है? रियल इमेज। ये वाला मैग्निफिकेशन तेरे पास दो केसेस में है, एक बार d by f है और दूसरी बार क्या है? 1 plus d by f। तो look at the advantage। Suppose d by f की वैल्यू कितनी थी? 3। तो पहला मैग्निफिकेशन तेरा कितना आया? इसने 5 टाइम्स बढ़ा दिया, दूसरे वाले ने कितना बढ़ाया? 3। ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 15। अब इस 1 का फायदा देख, 1 plus d by f का मतलब क्या होगा? इन 5 4 का क्या बन गया? एकदम मैग्निफिकेशन 15 से कहां जंप कर गया? 20 पर। समझ में आया क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में? दूसरी चीज, इसका ये जो रियल इमेज बनाने का पार्ट था, ये क्यों हमने बनाया? इस बोर्ड पर हम लेंस के जो अपना सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट को ला तो सकते हैं, लेकिन जितना पास में तुम ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, प्रॉब्लम ये आने लगेगी कि ये लेंस के लिए उन रेस को रिफ्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। देखना इधर जरा बोर्ड पर, तुम्हारा ये आईपीस है, सुनना रे, ये क्या है? आईपीस। अब ये आईपीस है और तुमने इसके बगल में यहां पर एक बैक्टीरिया रख दिया। कैन यू सी इस बैक्टीरिया के साइज के लिए तो तुम्हारा कोई सा भी आईपीस हो, वो केवल फ्लैट ग्लास सरफेसेस की तरह से काम करने वाला है। बैक्टीरिया उसका साइज क्या है? नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से जो लाइट आने वाली है, फिर से वही, ऐसा थोड़ी कि इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। बैक्टीरिया है, लाइट का सोर्स थोड़ी है खतरनाक। इसीलिए क्या आपने देखा है कि इस तरह की छोटी चीजों को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट सोर्स भी लगा रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो लाइट कम दे पाएगा, प्लस पास में आ गया, यू कैन नॉट जनरेट वेरी बिग लाइट कोन। उससे बचने का तरीका हमने क्या किया? हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास किसको रखा जाएगा? दैट बैक्टीरिया। ये ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे साइज का है, बहुत छोटे। क्यों है बहुत छोटे साइज का? सो दैट बैक्टीरिया से जो भी लाइट आ रही है, they all can be collected by this। इतना बड़ा लेंस और बगल में बैक्टीरिया, लाइट का रिफ्रैक्शन तो हो जाएगा भाई, लेकिन ये कलेक्ट नहीं कर पाओगे आप यहां पर। दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द साइज ऑफ लेंस
पता नहीं दिख भी रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फीड आ रहा होगा। ये है बैक्टीरिया और इसी साइज का ऑलमोस्ट क्या है लेंस। देन वी कैन कलेक्ट ऑल द लाइट रेज एंड वंस यू कलेक्ट ऑल दोस लाइट रेज helped by the LED और concave mirror जो भी आपने शायद देखा हो, LED से उसको लाइटिंग की हमने। अब वो जो लाइट आएगी इसने यहां पर क्या बना दी उस बैक्टीरिया की एक inverted image which will act this intermediate image is going to act as a what object for the simple microscope. This simple microscope now in compound microscope will be called eyepiece. ये आईपीस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का फायदा यहां से आ जाएगा। करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना समझ में आ गया होगा।